video is from Hillsar English Medium School. Hello friends, in the last second part of this lesson, we have covered till 9th question, 3.2 exercise. Let us move towards the 10th question. What is the 10th one? Express each of the following number as a sum of 3 odd prime numbers. 3 odd prime numbers के फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21. 21 how you can write 5 plus 7 plus 11. See 5, 7, 11. All three numbers are odd number as well as prime number. Next is 31. 31 हम कैसे लिख सकते हैं? 5 plus 7 plus 19. 53. 53 how to write? 3 plus 19 plus 31. And last number is 61. 61 we can write as 11 plus 19 plus 31. See the next question. Write 5 pairs of prime numbers less than 20. 20 से कम होने चाहिए. कितने पेयर्स लिखने हैं? 5 pairs of prime number whose sum is divisible by 5. जिसका सम 5 से divisible होना चाहिए. Answer is here. 2 plus 3 is equal to 5. See 2 and 3 both are prime numbers and जिसका सम 5 से जो खुद 20 से कम है उसका आंसर है 5 and which is divisible by 5. See next is 2 plus 13 where 2 and 13 both are prime numbers which are less than 20. 20 से कम है उसकी एडिशन कितनी आती है? 15. 15 जो है which is divisible by 5. Next is 3 plus 17. 3 and 17 both are prime number. Addition is 20 which is divisible by 5. Divisible by 5 means which comes in table of 5. 7 and 13 addition is 20. 19 plus 11 addition is 30. So that's all. See the last question, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called, जिसके 2 ही number factors होते हैं, we call it as prime number. Second, a number which has more than 2 factors, जिसके 2 से भी ज़्यादा factors होते हैं, we call it as composite number. Next, a number 1 is neither prime nor composite. Prime भी नहीं है और composite भी नहीं है. D question, the smallest prime number कौन सा है? 2 because 1 is neither prime neither composite. E question, the smallest composite number कौन सा है? 4 because 3 is prime number, 2 is also prime number, 1 composite भी नहीं है, prime भी नहीं. So the smallest composite number is 4. Last of this, the smallest even number. Even number कौन सा है smallest? 2 is a even number. 1 odd है, 2 is even. Let us move ahead. आगे के लेसन में क्या देखना है हमें? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. कौन से देखिए, विदाउट डिवाइडिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग वी कैन गेट द आइडिया दैट द पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर. 2, 4, 3, 5 और 10, 11, 9, 7 इन सब के डिविजिबिलिटी टेस्ट है. जस्ट वो रूल हम लगाएंगे तो हमें वी विल कम टू नो whether that number is divisible by any number. Now let us prefer this chart. In this chart we can get the idea about the number which is divisible by that particular number or not. So test for so many numbers are given: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. All these numbers we can get easily the idea about its test. See the first 2 number, whether the number is divisible by 2. How we will come to know? We have to just see the last digit of the given number. जो number दिया है उसके last digit जो 1 place पे number होता है वहाँ पे देखना है. Whether there is 0, 2, 4, 6 और 8. 0, 2, 4, 6 और 8 इन चारों में से, इन पांचों में से कौन सा भी एक नंबर अगर आए so that number is divisible by 2. Next is 3. If the sum of the digit is divisible by 3, मतलब वो जो नंबर है उसके हर एक डिजिट लेके उसका सम बनाना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 27. सो 27 में 2 and 7 है. 2 plus 7 कितना आता है? 9. सो 9 3 के टेबल में आता है कि यस. सो 27 इज डिविजिबल बाय 3 लाइक दैट. नेक्स्ट नंबर इज 4. इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, मतलब नंबर के कितना भी बड़ा नंबर हो, 3, 4, 5 डिजिट, 10 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमें देखने हैं. उसको हमें देखना है कि 4 के टेबल में आता है या नहीं. देन इट इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज 5. इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5,
जो वंस प्लेस में डिजिट है 0 है या फिर 5 हो, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट इज 6. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब 2 के टेबल में भी है 3 के टेबल में भी है, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. मतलब क्या हमें 2 की टेस्ट भी अप्लाई करनी है, टेस्ट ऑफ 3 ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई, दोनों भी पॉजिटिव है, देन इट इज divisible by 6. Next is 7. Cross off last digit, double it and subtract. Repeat if you want. If new number is divisible by 7, the original number is divisible by 7. Next 8. If last 3 digit is divisible by 8, जैसे कि 4 में किया था लास्ट 2 डिजिट लिए थे, 8 टेस्ट में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट लेने हैं. इफ दैट इज डिविजिबल बाय 8, then the number complete number is divisible by 8. 9. If the sum of the digit is divisible by 9, मतलब हर एक डिजिट का एडिशन करना है, अगर वो 9 से डिविजिबल है देन दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9. 10. If the last digit is 10, अगर 0 सबसे लास्ट में है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10. 11. Subtract the last digit from the number formed बाय रिमेनिंग डिजिट. लास्ट डिजिट है उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जितना भी नंबर बाकी है उससे सब्ट्रैक्ट करना है. इफ न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 11, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11. लास्ट इज इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, 3 and 4 के टेबल में है, मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 12. See, the first question in 3.3 is where to apply the divisibility test of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 and 10, and you have to complete the chart whether the given numbers are divisible by that particular number. अगर है तो yes लिखना है, नहीं है तो no लिखना है. So by referring the earlier chart I have given to you, we can complete this one. See the question 2. Using the divisibility test, we to determine which of the following number are divisible by 4 and 8. मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए उसको हमें वेरीफाई करना है whether that number is divisible by 4 and divisible by 8. For that we should know what are the divisibility test of 4 and 8. Using that we can easily solve that. See the first question, that is 572. We can do it by applying 4 divisibility test of 4. Here when we divide it with 4, we can get 18 answers. So remainder 0, it is completely divisible by 4. And we apply for 8, we get last 3 digit of the number. It is completely divisible as the remainder is 0. It is a positive for test of 8. See the next number is 7,26,352. Divisibility टेस्ट 4 क्या है, लास्ट 2 डिजिट. इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 तो क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, दैट इज 52. कंप्लीट डिवीजन जा रहा है, रिमाइंडर 0, सो दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट 8 से कैसे करना है, लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं, लास्ट 3 डिजिट्स आर 352. कंप्लीट डिवीजन जा रहा है 8 से, रिमाइंडर इज 0, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो. See next number 5500. divisibility test of 4 जो है वो नहीं आती क्योंकि लास्ट 2 डिजिट है, दैट इज 00 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4. एंड नेक्स्ट 8 से करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट 500 से करें, सो रिमाइंडर इज 4, 0 है नहीं, सो इट इज नॉट, दैट होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर इज 6000. 4 से करेंगे तो भी नहीं आता क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 00 है, एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज लास्ट 3 डिजिट 00 है, सो it is not now divisible by 4 also and 8 also. See the next number is 12,159. So divisibility test 4 क्या है, लास्ट 2 डिजिट लेंगे दैट इज 59. डिवीजन करो 4 से, आंसर इज 40 बट रिमाइंडर 3 है, सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. Well, take the last 3 digit, that is 159. Still the remainder is 7, so it is not divisible by 8 also. See the next one, 14,560. टेस्ट ऑफ 4 क्या है, लास्ट 2 डिजिट लीजिए 60. 60 इज कम्प्लीटली डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 0, therefore it is divided by 8 also. See the next question, 21,084. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 4 कीजिए, तो लास्ट 2 डिजिट 84 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आता है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 4. 8 से करेंगे, लास्ट 3 डिजिट लीजिए 0 8 4,
remainder comes 4 बाकी है, so it is not divisible by 8. See the next number, which is such a big one, so but it is very easy to identify whether to apply test of 4 and 8. Take last two digits 72, divide करो 4 से. Yes, remainder 0 आ रहा है, complete division हो रहा है, so that whole number is divisible by 4. 8 के लिए क्या करना है? Take last three digit, we got a remainder 0, that whole number is divisible by 8. That's it. See the further number 1700 divisible by 4. करिए, नहीं आ रहा है बिकॉज द लास्ट टू डिजिट्स आर 0 0. टेस्ट 8 लगाएंगे तो रिमाइंडर 4 है, सो दैट नंबर इज नॉट एट ऑल डिविजिबल by 4 also and 8 also. Similarly, here we can do it for 1250. Take last two digit, add the 50. It is not divisible by 4. Last three digit 150. It is also not divisible by 4 as the remainder is 6. So both this number is not at all divisible by 4 and 8. Let us see the third question. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. So 6 की divisibility test हमें लगानी है and we have to identify whether they are divisible by 6 or not. So what is the divisibility test of 6? When the number is divisible by 2 and 3, then that number is divisible by 6. That 2 के टेबल में भी होना चाहिए और 3 के भी. Means we have to apply both the divisibility test 2 and 3. अगर दोनों पॉजिटिव है then that number is divisible by 6. So for that it is given number, a big number is there. So पहले 2 से करना है. क्या है divisibility test 2? See, we have to find out its last number, that is the ones place number. Whether it is 2, 4, 6, 8, 0 है तो that number is divisible by 2. और 3 की क्या है? Adding all the digits of the number, जो आंसर आ गया, if that comes in table of 3, then that number is divisible by 3. So next question is, we have to find out whether the given number is divisible by 11. We have to apply here the divisibility test of 11. What is that test? See, if the difference between the sum of the digits at the odd place के जो digits लेने हैं उनका sum बनाना है. Then you take the digits at the even place. मैं कहाँ से start करना है? From right side of the number. उन दोनों को क्या करना है? Difference लेना है. So sum of all odd digits, difference, sum of all even digits. क्या आना चाहिए? 0 और 11. अगर वो आया तो that number is divisible by 11. So here we are done for all the questions. Next question is that write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number form is divisible by 3. मतलब वहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है जो छोटा हो और बड़ा भी हो सकता है, दोनों भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है. सो दैट नंबर विल फॉर्म इट इज डिविजिबल बाय 3. सो एक नंबर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, -6724. So we know that the number is divisible by 3 when sum of all digits of the number is divisible by 3. So ऐड करो सारे डिजिट्स को. 6 + 4 7 + 2 + 4 कितना आ रहा है? 19. सो 19 इज नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 3. अगर उसका 21 हो जाए तो 21 होने के लिए क्या करने का? 19 में +2 करना पड़ेगा. सो स्मॉलर डिजिट एट द प्लेस शुड बी 2. ग्रेटेस्ट डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करना है? इट कुड बी 8 बिकॉज नेक्स्ट नंबर इज 27. 27 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? +8 करना पड़ेगा. The smaller digit is 2 and the greatest is 8. The next question, 2 + 5 + 6 + 7 + 4, it is 24. So 24 itself is divisible by 3. So जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे 0 नंबर आएगा बिकॉज 24 में 0 ऐड करके 24 रहेगा विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. एंड एट दैट प्लेस इफ यू पुट 9 because 24 + 9 is 33, it will become divisible by 3. Now let us see the last question. We have to write a number so that the number become divisible by 11. So first number में क्या करना है हमें? Sum of the digit at the odd place कितना आता है? 14. And at the even place it is 17. Now we can take the difference of them. It is 3 plus missing number. So missing number क्या आएगा? डैश + 3 इज इक्वल शुड बी 11 क्योंकि दोनों की एडिशन 11 होनी चाहिए या फिर 0 0 इज नॉट पॉसिबल तो 11 होगी. सो व्हेन वी रीअरेंज दैट वी विल गेट द आंसर 8. सो मिसिंग डिजिट इज 8.
Finally, the next number also we can do in the same way, and we got a missing digit as 6. I hope you have understood this. Goodbye.